Good morning, all of you, and welcome you all in this platform of StudyIQ OPSC channel. So today is 25th of February. We'll discuss about national international news. Let's start. I hope audio and video both are working fine. Good morning, all of you. Good morning, Jai Jagannath. So today's motivational quote: "Life begins at the end of your comfort zone." So जो मैंने भी comfort prefer करूँचंदी over the effort. So obviously they should leave the comfort and start putting effort till your goal is achieved. So we'll discuss about few topics today with respect to national international news. The first of all, Data Act, and then HPV vaccination, and then minimum support price and PSLV. So let's come to the first one, Data Act. A data and RTA को लेके काफी discussion ही ची अगुरु भी, but still there are topics which are in newspaper. So background and legal evolution कौन देखंतु? Case Muthuswamy versus Union of India 2017 रो गोटे case थिला. सेठी कुहा गला कि right to privacy as a fundamental right under Article 21 और 19. यदि right to privacy comes under the Article 21, तो जदि RTA थ्रू रे आपनकर पर्सनल information जने मागुची, definitely that is very much right to privacy under fundamental right. So directed creation of a data protection framework. Government step up. Justice B.N. Krishna Committee 2017 submitted report and draft bill 2018. So as per the norms, Digital Personal Data Protection Act जो 2023 अच्छी enacted to protect the personal data of individuals from misuse by any entities. तेणु कौन सी इंडिविजुअल जदि आपन को पर्सनल डेटा आपन को मागुची या कौन सी अथॉरिटी एजेंसी मागुची, सो you have every right to protect it. You have every right not to share with the concerning authority. को रिसोर्स कौन ये जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट अच्छी, दैट इज सिंपली कंट्राडिक्टिंग इट्स वर्सेस आरटीए. आरटीए कौन कहूची? derives its authority or power from the constitution under article 19, that is right to know, plus it is a statutory authority which is under 2005. But still it is contradicting this fact कि जो DPAP जो अच्छी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट या पर्सनल लॉ जो लॉ थ्रू रे आसी, दैट इज समथिंग शोइंग कि आरटीआई थ्रू रे जदि पर्सनल इंफॉर्मेशन मगा जाए तेबे गोटे इंडिविजुअलिटी सबु पर्सनल लॉ दबा पई कौन नदी भी पारे. It is his or her own right whether he or she wants to share it or not. तो से personal information exempt unless larger public interest justified disclosure. ये होची section 8 subclause 1J. That is यदि public interest से तो deal करू नहीं तेबे that person should not or may not share the information with all. So DPDP Act section 44(3) कौन कहूची? Yes, grants blanket exemption from all personal information, removes larger public interest test. So DPDP Act कहूची ये जो public interest रहिले जने शेयर करी पारिबो जो आगुरु थिला आरटीआई रे, बर्तन सेटा को भी एमाने रिमूव कर देले. दैट मींस एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दे देले with respect to the personal information. जदि जने चाहुनी whether it is very much dealing with the public interest से इंफॉर्मेशन दबा को बाध्य नुहे. कंट्रीब्यूट कहीं देखो डाइल्यूशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन. राइट टू इंफॉर्मेशन कौन होची ना प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को बैलेंस करूची. बर्तन आम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दबा फल अकाउंटेबिलिटी विल बी रिड्यूस्ड. एवं सिंपली मैं आपको एग्जांपल देइथली जो प्राइम मिनिस्टर डिग्री ऊपर बारंबार क्वेश्चन रेज करागला एवं डीयू को मागागला दिल्ली यूनिवर्सिटी को, कारण प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते कि मु पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी इन पॉलिटिकल साइंस, तो तांको जो डिग्री मगागला दिल्ली यूनिवर्सिटी मना कला कि डिग्री इज समथिंग नॉट डीलिंग विद द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, सो वी आर नॉट रेडी टू शेयर इट विथ एनीवन. सो पोटेंशियल इंपैक्ट कौन ना डिनायल ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स, प्रोक्योरमेंट रिकॉर्ड्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वीकेंस एंटी करप्शन ओवरसाइट वाया आरटीआई. तेणु ये लॉजिक को जदि आपण एक्सटेंड करिवे तेबे ही पारे गोटे इंडिविजुअल जो सपोज गोटे जज कर आमे प्रॉपर्टी देखुचे, प्रॉपर्टी कोठी शेयर करा जाउची सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रे, ओके वेबसाइट रे.
तो जो जजेस मानकर प्रॉपर्टी अच्छी या को ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर मानकर जो ऑफिसर मानकर जो आपनकर प्रॉपर्टी अच्छी they will not share it with the government or they will not share it with the public. So जोटा कि वेबसाइट रे अपलोड हे परिबो. So asset and liabilities of public officials may not be revealed. तेणु ये किछि जिंस होचे कोन ना ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज करूचे. दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल सेज. जदि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज आपण देखिबे violates article 19(1)(a) right to information and violates article 21 due process and transparency. So say the point this has been referred to the constitutional bench. ठीक अछि. तो दुईटी बेसिक क्वेश्चन रेज करूची. प्राइवेसी आर्टिकल 21 अंडर द पुट्टुस्वामी एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन 19 and 21. ये दुईटी आर्टिकल को मन रखथिबे आपनकर मेंस हो प्रीलिम्स हो क्वेश्चंस आपनकर आसी पारे. मूविंग टू द नेक्स्ट HPV वैक्सीनेशन. ये HPV वैक्सीनेशन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री. टारगेट गर्ल्स एज्ड 14 years फॉर मैक्सिमम प्रिवेंटिव बेनिफिट बिफोर HPV exposure, voluntary and free of cost, ensuring equitable access across socio-economic groups. Vaccine and coverage यदि देखिए India will use quadrivalent HPV vaccine protects against type 16, 18 and type 6 and 11. Single dose schedule backed by the global and Indian evidence for durable protection. So these are some of the initiative that has taken by the government with respect to the HPV. A vaccine procured through a transparent global mechanism, that is with the Gavi and Vaccine Alliance, ensure quality assurance, strong cold chain logistic, nationwide uninterrupted supply. Implementation कोण ना आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो अपन PHC गुडी कची ता थ्रू रे डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ये सब रे मध्ये आपनकर वैक्सीनेशन रो सुविधा रहिबो. ये जो HPV वैक्सीन कहले कोण ना जो सर्वाइकल कैंसर अछि से सर्वाइकल कैंसर को ही प्रिवेंट करबा पई आपनकर वैक्सीन को आमे दउचे. सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग इंडियन वुमेन, 80,000 न्यू केसेस एनुअली हमको देखिबो को मिलुचे. दिस इज लार्जली प्रिवेंटेबल बाय HPV वैक्सीन and early screening जदि हमर अछि then that can be preventable. HPV vaccine show 93 to 100% effectiveness and non-live vaccine cannot cause HPV infection. Strong global safety record जदि आपण देखिबे 500 billion doses administered since 2006. Yes. Now coming to the MSP part, center increases MSP for the jute by 275 per quintal. MSP की अनाउंस कला डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. ये फाइनल डिसीजन अथॉरिटी व्हिच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. 275 पर क्विंटल ऑन द प्रीवियस सीजन थ्रू रे सबने जूट ऊपर MSP बढ़ाई चंदी. बेनिफिटिंग जूट ग्रोअर्स स्पेशली इन द मेजर स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल एंड असम कारण से स्टेट रे वर्तमान आपनकर इलेक्शन मध्ये आसुची. According to Prime Minister Narendra Modi, the move reflects continued government support for the farmers. Revised MSP ensures 61.8% return over the all India weighted average cost. Objective kono enhancing farmers' income, promote jute cultivation, support the natural fiber sector. Now question is MSP कहले कोन MSP होची minimum support price before the harvesting season आपनकर कोन करा जाय एटा को लागू करा जाय. Okay, announced by the CCEA but it is recommended by the CACP, Commission on Agriculture Cost Pricing. मन रखते बे Commission on Agriculture Cost Pricing ये commission अपन को recommend करे एवं ये तक को approve करे that means तक को announce करे. ये CACP होची an autonomous body under the Department of Agriculture and Farmers Welfare under एक काम कुची. See by considering different factors से कौन करे अपन को अनाउंस करे या रेकमेंड करे इनफैक्ट MSP को ये अनाउंस करे अपन को CCEA. अच्छा MSP होची गोटे सपोर्ट प्राइस मु जेमति कहली सपोज अपन फार्मर जते बेले तारो फूड ग्रेन्स हार्वेस्ट करूची कल्टीवेशन करूची एटलीस्ट फार्मर शुड नो कि मोर प्रोडक्शन रो वैल्यू केते प्राइस केते. तेनु गोटे एश्योर्ड प्राइस हिसाब रे काम करे गोटे प्राइस सिग्नल हिसाब रे काम करे कि मो प्रोडक्ट रो मार्केट रो वैल्यू केते अछि. एश्योर्ड रिटर्न भी गोटे काम करे. ये सब जिनस गुडी को अपन को MSP रे देखिबा को मिले. ओके. नाउ coming to the PSLV, committee to prove repeated failure of PSLV, says ISRO. A high-level external expert committee constituted to examine systematic organizational issue behind the successive failure
Indian Space Research, that is PSLV. Committee includes eminent scientist K. Vijay Raghavan, S. Somnath. Focus extend beyond technical faults, manufacturing procurement processes, assembly and quality assurance system, and accountability mechanism within India's expanding public-private space ecosystem. तो जो आपनकर कंप्लीटली जो फेलियर हमको देखिबा को मिलुची पीएसएलवी को नै कि जो दुईटी हाई लेवल कमिटी फॉर्म करा जायछि विथ एमिनेंट साइंटिस्ट, गोटिए कमिटी दुईटी मेंबर के विजय राघवन एंड एस सोमनाथ. मिशन फेलियर देखंतु जनवरी 12 2026 रे ये मिशन फेलियर हेतला पीएसएलवी सी 62, पीएसएलवी सी 61 भी फेलियर हेतला 2025 रे. Nature of investigation goes beyond routine failure analysis committee that is seeks to identify organizational and systematic lapses, and ISRO chairman जी अपन कर थिले वी नारायण से रिपोर्ट अपन कर सबमिट कर थिले. सिग्निफिकेंस कोन ना रिलायबिलिटी इंश्योर करबा को पड़िबो. इंडिया's workhorse launch vehicle, integration of private sector in the space, need for stronger quality control, and termed as a third party appraisal by the Minister of State for Science and Technology. Okay, MCQs देखिए. The Digital Personal Data Protection Act 2023 was finally primarily enacted to protect personal data of individuals. India's nationwide HPV vaccination program targets women aged girls aged 14 years. Major beneficiary of MSP for raw jute, West Bengal and Assam. PSLV stands for Pollard Satellite Launch Vehicle. And ये दुईटी आपनकर मेंस रो क्वेश्चन अछि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एंड सर्वाइकल कैंसर विथ रिस्पेक्ट टू द एचपीवी वैक्सीन. ओके, जो माने भी हमरो लगातार भाव रे एस्पिरेंट्स माने अछंती से माने हम StudyIQ एप्लीकेशन हो कि वेबसाइट को जाईकी आपनकर फाउंडेशन कोर्स को मध्ये एनरोल करि परिबे, फ्री टेस्ट मध्ये अवेल करि परिबे, फ्री किछि मटेरियल भी अवेल करि परिबे बाय लॉगिंग इन द एप्लीकेशन. वर्तमान आपनकर पावर प्ले ऑफर चली 50% ऑफ इन ऑल फाउंडेशन कोर्स जदि आपन चाहिबे एनरोल करि परिबे by using the code J in live. गोटे नंबर अच्छी से नंबर थ्रू रे मते कनेक्ट करि परिबे एंड पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रे मिल जिवो. थैंक यू.